Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. This is the second and the last lecture of the chapter 1.4 Big Data, Big Insights. In the last lecture, we had seen what is big data, then 5 V's of big data, then uses of big data. Of course, we had seen introduction of the chapter. Secondly, we had seen in the last lecture summary of the chapter. Lastly, we had started line by line explanation of the chapter. However, that is not yet complete. So in this lecture, what we are going to do, please see the slide. It is listed properly in this slide. Firstly, we will complete line by line explanation of this chapter. Secondly, we will do margin question answers of this chapter. Thirdly, we will see icebreakers, and lastly we are going to do brainstorming questions of this chapter. So without wasting time, let's move on to the chapter from where we stopped. From there we will start. So let's see line by line explanation of the chapter, page number 37. So we were doing uses of big data. Firstly, we had seen location tracking. Point number 2 is understanding the weather pattern. Yes, students, a very important thing. Because of this, because of the big data, before any कैलामिटिक प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग टू कम, यू गेट द इंफॉर्मेशन. अभी कहीं पे बहुत ज़ोर से स्टॉर्म आने वाला है, कहीं पे बहुत ज़ोर से बारिश हुआ है और होने वाला है, तो आपको पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग आ जाता है ऑन योर मोबाइल. आपको पहले से ही देखो मोबाइल में हमेशा वेदर फोरकास्टिंग आता है दैट टुमारो देयर इज़ अ गुड सनी डे, टुमारो देयर इज़ अ क्लाउड, टुमारो इट इज़ गोइंग टू रेन. तो ये सब क्या है? ऑल दिस थिंग्स इज़ द वेदर पैटर्न विच we know because the big data collects the information, because we know, because we want to know, and accordingly they give the information. So there is a great weather sensors and satellites set up all around the globe. Thanks to the satellite and thanks to the scientists who had made the satellites, and because of this we understand what is going to happen on our earth. Earthquake is going to come, flood it is going to come, tsunami aane wala, or any of the conditions are arriving. So wo condition satellites understand it in a very proper way and gives us the information, and that information we get directly through, you can see these weather forecasting. So huge amount of data is continuously being received from them. Okay, every time nowadays you can see people are very much alert. कहीं भी निकलने से पहले they first see the weather कैसा है, मौसम कैसा है, देख के ही बाहर निकलते हैं. So we actually are very much conscious. So these data, they understood that you are actually searching for a weather. तुम weather देखना चाहते हो, मौसम का हाल देखना चाहते हो, तो वही चीज़ वो दिखाते हैं. whatever you want to see, that only they are going to show you. So and they make you alert also. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. Also they instruct also that today it is going to rain badly, it is going to rain much. So all information we are going to gather from this weather forecasting channels. Weather pattern gives us the warning also. Sometimes if there is a thunderstorm, बहुत ज़्यादा thunderstorm आने वाला है. Okay, impending means it is going to happen something disaster. कुछ पहले से नेचुरल कैलामिटीज़ का यू कैन सी दे गिव अस द सिग्नल्स. ओके, यू कैन सी दीज वेदर एप्स जो वेदर हमको बताते हैं, और गूगल मैप्स दे टीच अस, दे इंस्ट्रक्ट अस दैट द फ्लड और अर्थक्वेक कैलामिटीज़ वी ऑल नो दैट great or often sudden damage or distress or problems which are going to happen through nature naturally अगर कुछ होने वाला है, like floods आने वाला है, earthquake it is going to happen, or tsunami, any of the condition it is are reaching up to it, they gives us the information. Necessary preparation also happens. अब देखोगे government also tries to prepare through this and they alert the people also about this natural calamity. So of course necessary preparation to combat means to fight with this problem we can do. ओके, एंड कैन मेड वेल इन एडवांस. अभी पहले ही आपको पता चल जाएगा कि फ्लड लाइक सिचुएशन है, तो आप व्हाट यू कैन डू बाय योर सेल्फ. यू विल डेफिनेटली कीप फूड एट योर होम एट अ प्रॉपर वे. आप जो सेफ्टी मेजर्स है टू get rid of the problem of earthquake, flood or any of the natural calamities, we all will try to
do it in advance. Next, here it has been said we can study global warming. Through this big data, we can understand the big problem of our world is the global warming, how we are destroying our mother earth. So we can study, and the problems of global warming we can study from here. Next is we can also predict the availability of natural resources like water. Okay, because of the big data, we will get the information where there is a big amount of coal, petrol or water, which is the natural resources is there, and we can predict. And once we come to know that if that place is having a drinking water or natural resources like coal, petrol is there, we can go, we can do the mining, and we can get the fresh water or coal or petrol from there. So big data helps in several ways. Of course, whatever we want to see, that it shows, and even in the research work also, this big data helps in finding out the problems of global warming, how to come out from the problem of global warming, and understand where there is a water scarcity and tries to give the availability of the water in that places. Third is healthcare industry. Now you can see today we see that the people have become very health conscious. Because of the COVID also, you can see we are very much health conscious, and every time we are seeing on the Google, we are searching, we are browsing on the YouTube how to increase our immune system, how to be fit and fine. All these things we are searching. Why? Because we want a good health. So nowadays so many inventions had happened, like smart watches. We wear the smart watches especially when we are doing the exercise, which makes us understand that what is our pulse rate, our heartbeat rate. From there we understand. So many health apps are there where it teaches us that which type of food we have to eat to be healthy, fit and fine. In our phone keep on collecting data. और ये याद रखो कि आप जैसे ऑनलाइन होते हो, ये सारा थिंग्स आप जो वीडियो ऑनलाइन देखते हो, it is being monitored. This data has been collected by this big data companies. We can say that they are our own mini biomedical research devices. Okay, so this big data is nothing but they are analyzing what type of medicines that we are searching. Yes, they detect our heart rate, monitor patient's sleep pattern, keep a record of his exercise and distance walked, etc. So this big data detect even the problem of the heart rate. If it is a severe problem is there, if you search on the Google, it will give you the result कि इट मे हैपन, आपको ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये सिम्टम्स है तो. इवन आपका स्लीपिंग पैटर्न, पेशेंट का लाइक रात को नींद नहीं आता और सम प्रॉब्लम इज देयर एट नाइट व्हेन you are going to sleep. Big data helps to detect or find out the problem that you are having and keep the record of the exercise and those who are regularly doing the exercises, and even exercise related channels it is going to show to you. And wherever you are going, walking, whatever it is, this big data keeps the data by himself and accordingly he gives the result of it. Give you the analytical or कलेक्ट हो रहा है आपका डेटा एक जगह पे. ओके, एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन. आप लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी योगा आप देख रहे हो बाबा रामदेव का, ठीक है, वो जैसे ही देख के फेसबुक पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, और फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ ब्राउज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, आपको देखोगे पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइन से दिखाना स्टार्ट कर देगा. व्हाट इज़ दिस? योर नीड्स, योर लाइक्स, योर टेस्ट, योर डेमोग्राफिक thought, behavior, it is monitored and accordingly it has been present in front of you. मैंने कहा ना, these big data is something what you like that it is shown. So you can see nowadays we have the gadgets to monitor like blood sugar, blood pressure 24/7. Yes, all these things are monitors. आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो अबाउट चेकिंग ऑफ योर ब्लड शुगर रेट, ब्लड बीपी चेक करने के लिए जाते हो, हॉस्पिटल्स स्पेशली दे कलेक्ट द पेशेंट्स रिकॉर्ड इन सच अ वे एंड दे कलेक्ट इन अ कंप्यूटर में ये सारे डेटा दे गो ऑन कलेक्टिंग अबाउट द पेशेंट, एंड that data of course it has been
properly collected by these big data industries. Yes, so with the help of the big data, the doctors क्या करता है, doctors can able to diagnosis whatever the problems that we are having. Okay, alignment means, underline the word, it means diseases or illness, whatever the problems we are having, the doctor understood. जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, you go to the doctor, and doctor what they do, the doctor take the record of everything. They take first bp, they first take your pulse rate, then heartbeat rate, and all these things are you can see recorded in a computer. And after some period of time, by seeing this data, the doctor gives you the medicines. And ये सारा things आप जो कर रहे हो कंप्यूटर पे ऑनलाइन, all these things are monitored, एनालाइज्ड, अंडरस्टूड बाय द बिग डेटा इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर कोई एरिया में लाइक फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड बहुत हो रहा है, तो वो डेटा कैसे पता चलता है, बाय सीइंग द पर्टिकुलर एरिया, सीइंग द रिकॉर्ड्स कि वहाँ पे कितने लोगों ने फीवर चेक कराया, कितने लोगों ने पल्स रेट चेक कराया, ब्लड शुगर रेट चेक कराया. बाय सीइंग दिस इट इज़ बीन अंडरस्टूड बाय द डॉक्टर्स एंड thanks to the big data industries. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. अभी जैसे हम लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड में we can analyze that this is COVID-19 and this is caused due to such problems. ठीक है, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड हाउ इट इज़ बिन क्योर्ड, ये सब हमको पता कैसे चला इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द बिग डेटा. द बिग डेटा हैज़ collected the information in such a way that there is no guesswork. What's the people, what's the patients, they are facing the problem, accordingly the data is been collected and it is analyzed, monitored and come to the conclusion. Big data helps in monitoring the outbreaks of the epidemics अभी आप देख ही रहे हो, COVID-19 epidemics means a widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time, and the best example is the COVID-19. पहले था ये सारे problems like tuberculosis, cholera in the earlier days, but let's come to the recent days. It is COVID-19. You can see the corona disease, it is increasing in such a way, तो वो तो epidemic और pandemic disease हो गया. ठीक है, so ये सारा data आप देखोगे, it is whatever the doctors are doing, they are doing on the computer. आपका patient का record, x-ray, pulse rate, जो भी check करना है वो सारा record they do in the computer. And computer में करने से क्या होता है student, all this data it has been collected, it is monitored, analyzed by the big data company. Just when you post any message, I am down with flu, जैसे ही आपने ये एक मैसेज फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल देते हो कि टुडे आई एम नॉट सफरिंग वेल, स्टेटस डाल दिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया ये मैसेज, you will see that your data it has been analyzed and monitored, and the areas affected by flu can easily located and necessary precaution can be taken. आप देखोगे कि आप जैसे ही व्हाट्सएप और फेसबुक बंद करके you come on the Google, you come on the YouTube, you start listening the song at the MX player, आपको नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर्स के पॉपअप आने लगेंगे. So it is going on giving you the recommendations that whatever the problems you are having, you can take the precaution and take the help and be cured. मतलब ये मत समझो कि वो बिग डेटा सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन निकाला है. बिग डेटा इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन सेवरल वेज. फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा of people to promote research in particular area. Pharmaceutical company, it means medicine companies, they actually collect lots of data from this big data. वो लोग medicines तभी बनाते हैं while seeing the feedback of the people, which type of medicine it is liked by the people, कैसा उनको सूट हो रहा है. So all these things they first take the big data companies information, they collect the information and accordingly they मेक द एनी ऑफ द मेडिसिन्स. एंड बिग डेटा ये सारा इंफॉर्मेशन निकालता कहाँ से, फ्रॉम द हॉस्पिटल्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ द डेटा गैदर्ड, इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस, सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग. यू कैन सी दैट in a hospital I had said all things are monitored on computer, so large amount of data it has been collected about the patients, whatever the patient is having the problem, from BP, from sugar, from x-ray, whatever they are doing. I had told, मैंने summary में भी यही example दिया था. It is been collected in a big volume, veracity, velocity, variety and value.
फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो लोग इसको अच्छे से यूज़ करते हैं पीपल का इंफॉर्मेशन लेके, एंड दे हेल्प टू द पीपल बाय गिविंग द गुड इंफॉर्मेशन, गुड नॉलेज, गुड सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर डिजीज और प्रॉब्लम. So let's see the point number 4, that is banking, finance and trading. In the field of banking, how big data is helping, that we are going to see. Big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance company to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. So in this paragraph you can see the big data is actually nowadays see in which field the people is very much conscious to do the investment. Like for example, अगर मुझे क्लिनिक वहाँ पे कहीं पे डालने का है तो मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करती हूँ. ऑफकोर्स मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगी, तो गूगल इज़ नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स दैट व्हाट आई वांट टू डू इन माई फ्यूचर. तो वो उसी टाइप्स के मुझे न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स बताएगा फ्रॉम अनदर एजेंसीज एंड कंपनी, सो दैट आई विल इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड. ये बिग डेटा क्या करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं पर्टिकुलर शेयर में पैसे डालने के लिए सोच रही हूँ तो मुझे म्यूचुअल फंड में डालने का है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी वहाँ पे डालने का है कि मैं बैंक में एफडी कराऊँ पैसे का, ये सारा थिंग्स अगर मैं नेट पे जाके गूगल करके जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो पूरा बिग डेटा रिकॉर्ड करता है. एनालिटिक्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वॉन्ट टू डू एंड अकॉर्डिंगली हमको वो पॉपअप मैसेजेस या नोटिफिकेशन या रिकमेंडेशंस वो लोग देते हैं. नेक्स्ट पैरा, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज यूजिंग बिग डेटा टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स. ये एक बहुत हेल्पफुल है बिग डेटा टू प्रिवेंट to solve the problem of the cyber crimes. So students, you can see all the data which is done in bank, it is fully related to the computer पे सारा काम बैंक का होता है. But there are some people who does the fraud things and they actually take out the money from the another सिविलियंस, कॉमन पीपल. तो ये जो फ्रॉड हुआ, जैसे कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपने एटीएम में जाके और फॉर एग्जांपल कोई मॉल में जाके स्वाइप किया, these fraud peoples tried to take the money from the particular person's account. तो ये जो fraud business हो रहा था, big data helps in even finding the problem and solving the problem of these people. Archival means old ऑडिट ट्रायल्स. ओल्ड ऑडिट्स जो रहते थे, आप बैंक में आप जाओगे तो पुराने अकाउंट्स जो रहते थे उनको वापस से फाइंड आउट करना, टू अंडरस्टैंड, ये सारा थिंग्स जो डेटा हम कंप्यूटर में रहता था अब वो इजी हो चुका है. ओके, बिकॉज ऑफ द बिग डेटा, बिकॉज बिग डेटा कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन और वो याद दिलाता है कि ये टाइम पे आपने कोई ऑडिट किया था. बाय एनालाइजिंग द पास्ट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स एंड द डेटा ऑन प्रीवियस ब्रूट फोर्स अटैक्स, बैंक कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर अटेम्प्ट्स. अभी जैसे मेरा कोई क्रेडिट कार्ड है और वो मीन्स मिसयूज़ हो गया, इट मीन्स उसमें से कुछ पैसे निकल गए या कुछ, और कोई मेरा अकाउंट का पासवर्ड जान के पैसे निकालने लगा, तो ये मैं जाके बैंक में अगर प्रॉब्लम बोलती हूँ तो डेफिनेटली मेरा सॉल्व कैसे हो रहा है. द हेल्प ऑफ द बिग डेटा द प्रॉब्लम इज सॉल्व. ब्रूट फोर्स अटैक, इट मीन्स अ साइबर अटैक दैट रिप्लाइज ऑन गेसिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ टारगेटेड पासवर्ड अंटिल द राइट वन इज फाउंड. देखोगे आप लोग एटीएम में जो भी पासवर्ड आप लोग डालते हो तो उसके बाद स्टूडेंट आप डाल के पैसे निकाल के चले जाते हो, बट देयर आर सम पीपल हु एक्चुअली वांट्स टू नो योर पासवर्ड एंड दे वांट टू टेक आउट द मनी फ्रॉम योर बैंक. बी अलर्ट वेन एवर यू आर यूजिंग द एटीएम कार्ड्स. येस, सो हियर यू कैन सी, ये लोगों से बचने के लिए, इट मीन्स ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए, यू कैन सी दीज बिग डेटा इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट योर मनी इज सिक्योर्ड और सेव्ड. डेटा ओनली हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग साइबर क्राइम्स, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड मिस्ड ट्रांजैक्शंस एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग. फॉर एग्जांपल मैं एटीएम गई, मैंने 10,000 रुपीज़ आई हैड टेकन आउट और मुझे स्लिप आ गया कि मैंने 10,000 डिडक्ट किया है. मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ गया कि मैंने 10,000 रुपये निकालने हैं, पर मुझे कैश नहीं आया. आई डिडंट रिसीव द कैश. तो अब मैं टेंशन में आ गई कि मेरे अकाउंट से भी 10,000 निकल गए और मुझे पैसे भी नहीं मिले. तो अब मैं ये प्रॉब्लम जाके या तो बैंक मैनेजर को कॉल करती हूँ, प्रॉब्लम बताती हूँ, तो दैट प्रॉब्लम
problem would be solved. How you can see? Because of the big data, क्योंकि big data के पास सारा information रहता है, when the money is been taken out or not, all these things it is present in that big data. 15-20 मिनट के बाद आपको मैसेज आता है कि आपका पैसा 10,000 नहीं डिडक्ट हुआ है, यू आर गोइंग टू गेट योर 10,000, तो आपका 10,000 रुपये कैश मिल जाता है. So it can even predict the possible spikes on servers so that the banks can manage transactions accordingly. It means you can see even कोई भी fraud or some problem अगर आने वाला रहता है, this big data gives the alert to the bank to come. तो मुझसे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ट्रांजेक्शन मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कोई फंड ट्रांसफर किया जैसे NEFT किया, RTGS किया, ठीक है, किसी कस्टमर का वो बोलता है मैंने तो NEFT किया था पर वहाँ पे जिनको भेजा उनको मिला नहीं, तो ये ट्रांजेक्शंस इस बिग डेटा के थ्रू फाइंड आउट करता है कि वेदर द मनी इज बीन रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट, और अगर नहीं मिला रहता है तो उसको मिल जाता है. नेक्स्ट पैरा, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन इज यूजिंग बिग डेटा टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटी. द SEC, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, इज यूजिंग द नेटवर्क एनालिटिक्स, दैट इज insights and natural language processors to identify possible frauds in the financial market. Here you can see SEC, that is Securities Exchange Commission, बहुत ही ज़्यादा टेक हेल्प लेता है किसका? बिग डेटा का, बिकॉज बिग डेटा जितने भी फ्रॉड्स जो ट्रेड्स होते हैं उसको स्टॉप करने में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल इन शेयर मार्केट सम पीपल अनवांटेडली से दैट यहाँ पर कोई कंपनी है उस पर आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट मोर मनी, बट सच कंपनी नेवर एग्जिस्ट. सो बिग डेटा पहले इन्फॉर्मेशन देता है कि विच कंपनी इज़ फ्रॉड एंड विच कंपनी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तब जाके आप उसके ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हो देन यू आर गोइंग टू गेट द मनी. तो फ्रॉड जो रॉन्ग थिंग्स हो रहे हैं, बिग डेटा हेल्प्स इन स्टॉपिंग into it. Next para, if you would see, high frequency trading, that is HFT, is an area where big data finds a lot of use of today. High frequency trading जो आजकल चल रही है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में हम लोग डाल देते हैं पैसा, लाइक हमको एजुकेशन लोन चाहिए रहता है, लाइक हमको घर में कोई रेनोवेशन कराना है, फॉर दैट वी रिक्वायर द मनी. सो फॉर दिस प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस के लिए इफ यू वुड सी नाउअडेज पीपल आर सेविंग द मनी. ओके, तो वो जो है बिग डेटा वो आपका एनालाइज करता है दिमाग कि आप पैसा किस लिए जमा कर रहे हो, वाई यू आर डिपॉजिटिंग द मनी. आप एजुकेशन के लिए डिपॉजिट कर रहे हो या रेनोवेशन कराना है, घर खरीदना है, किसके लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए और लॉन्ग टर्म लोन चाहिए. ये सारा जो एल्गोरिथम है, okay, algorithm means the process of set of rules to be followed in calculations especially by the computer. ये कंप्यूटर खुद से फाइंड आउट करता है. कंप्यूटर कैसे फाइंड आउट करता है? विद द हेल्प ऑफ द बिग डेटा. विद द हेल्प ऑफ द बिग डेटा दीज बिग कंपनीज, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो कंपनीज है, ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसको किसको कभी कभी कब लोन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी दे डू द ट्रेडिंग. Okay, today majority of the equity tradings now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from the social media networks and news websites to make buy and sell decisions in a split seconds. आज देखोगे so many ads, advertisements come of mutual funds, of बिरला mutual funds, टाटा का आता है, LIC का आता है, इतने सारे फंड्स आते हैं. It has been said कि हमको उसमें पैसे लगाने चाहिए so that हमको आगे भी यूज़फुल रहेगा. LIC का आता है वाई कि हम लोग आगे भी हम लोगों को यू नो फॉर एजुकेशन, फॉर परचेजिंग ऑफ द हाउस में यूज़ हो. तो ये सब हम लोगों को क्यों दिखाते हैं? बिकॉज इट इज़ मेकिंग अस अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कलेक्ट द मनी. एंड अब आजकल हम लोग FD फिक्स डिपॉजिट बैंक में करने से अच्छा हमको लगता है कि शेयर्स में इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग द मनी वी विल अर्न मोर. तो ये हम लोगों को और big data is helping us to change the people's lifestyle. Next, fifth point, if you would see, it is sports. When watching a cricket match, we are shown so many permutations and combination of the statistical analysis. For example, Virat Kohli is playing. So Virat Kohli जो play करने के लिए क्रीज पे आता है, you can see उसके साथ past जो क्रिकेट जब भी उसने खेला था उसके सारे रिकॉर्ड्स उसको दिखाते हैं. स्पेशली अगर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है तो लास्ट 5 years का पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा ला के आपके सामने रखता है. सो दैट इट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन.
A gigantic, it means a big data, has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workout. कभी भी आप बैठ के recording देख सकते हो, and even the training sessions of these people, how they are working, all these things it has been shown. Okay, so how it has been shown? Because of the help of the big data, because the people want to see. मैंने कहा ना, big data is something that what you like to see, that has been shown to you. Yes, the data enables a sportsman to study his performance as well as of the other player worldwide. अभी एक स्पोर्ट्समैन है, अभी उसको कैसे आउट हुआ, जैसे MS धोनी, इफ ही नॉट बैटेड वेल इन द IPL, तो वो बार बार जाके एज अ स्पोर्ट्समैन ही विल सीइंग वेयर ही हैड मेड द मिस्टेक, व्हाट हैपेंड टू हिम. सो ये करने से क्या होता है, उसका बेटर परफॉर्मेंस होता है, दैट ही अंडरस्टैंड्स दैट या I was wrong over here, I have to change it. It was tremendously helped in, it means in a big way, tremendously means in a big way helped in improving the individual cricketers as well as the team performance. By analyzing the past mistakes, the cricketers can able to improve his performance, and this is benefited by even the team. The sensors embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarters. Not only this, आप देखो होगे क्रीज के नीचे सेंसर्स लगाए रहते हैं, सो दैट वेन एवर दीज क्रिकेटर्स आर बैटिंग एंड बॉलिंग एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, We can hear them. इट्स अ बिग ग्राउंड, वी कांट एबल टू हियर, पर उसके क्रीज के डाउन में आप देखोगे देर इज अ सेंसर्स, एंड बिकॉज ऑफ द सेंसर्स वी कैन हियर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड, हाउ वाज द पिच कंडीशन. ओके, ऑल दिस थिंग्स इट इज शोन बाय द हाउ वाज द ग्राउंड कंडीशन, ऑल दिस थिंग्स आर recorded in by the big data and they are showing in between the matches. The sensors help us to understand the field condition. Not only this, field condition ही नहीं बताता है, weather forecast भी करता है, individual performance भी बताता है. So video analytics, that is the big data, those who are analyzing help us to see each and every performance minutely. Those not only the match but also the pitch, but also the weather condition, how the cricketers are performing, कैसे catch out हुआ, all things are shown to you. ठीक है, so to make you more interested. Next, advertisement. Yes, now come to the main topic, that is advertisers. Advertisers you can see there are so many. मैंने starting से ही advertisers का example देते हुए आपको start किया था chapter. Advertisers are one of the biggest players in big data industry. It is biggest player. Okay, they play a very important role. Like for example, be it a Facebook, be it a Google, Twitter, or any other online giants like Zomato, Swiggy, Instagram, yes. So these all, if you would see, keep a track of the user behavior and transactions. Okay, ये लोग सिर्फ आपके ऊपर नज़र बना के रखे कि which ऐप यू आर यूजिंग, कौन कौन सा ऐप आप यूज़ करते हो, और उस ऐप पे आपको फुल टू एडवर्टाइजमेंट्स उसी चीज़ का जो आप सर्च कर रहे थे दे आर गोइंग टू सी टू यू. दे आर seeing my behavior, what I am searching, what I am doing. Yes, these internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers that they can run targeted campaigns. Okay, आजकल तो अमेज़ॉन का सो मेनी यू कैन सी ऑफर्स आया है. आप एक अगर कैमरा कुछ भी सर्च करते हो, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स यू आर गोइंग टू get. And how it is because the advertisers plays a very important role in showing off the products, and because of this their products are sold. Take Facebook example. चलो एक Facebook का example लेते हैं. Here you can target people based on buying intent, websites visit, interest, job roles, demographics and what not. आप अगर Facebook पे अगर आप देखो student, you can do so many things on one site. एक ही आप ऐप पे देखोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो. Like Facebook पे you can buy the products, you can purchase the product, you can go to the websites and collect more information about it. Whatever the interest you are having, accordingly the Facebook show to you what you want to buy, that is showing to you. तुम्हारा demographic behavior क्या है? Demographic means statistical data relating to the given population and particular groups within it. मतलब तुम्हारा जो search कर रहे हो, whatever you are searching, what is your thought, what you like. So you can see
all the things related to the ads, it is going to come over there. All this data is collected by Facebook algorithm using data analytics technique. और ये सारा things कैसे होता है, Facebook पे जो data analytics है, those collect the data from us and they give to the respective companies that कि तुम्हारा product में प्रॉब्लम है तो ये डेटा लो और इसके ऊपर वर्क करो. The same goes for Google. When they target people based on the clicks, you will get different result, and when you create a campaign for leads, then you will get different result. All this is made possible using big data. आप देखोगे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप देखोगे nowadays it is going to be the none other than these advertising agencies who get lots of benefit because they understand the people mind and they create the product in such a way, and that's why it's a big result comes to them. Next is entertainment and media. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. For example, YouTube और Netflix. अगर आप YouTube पेज अपना देखोगे YouTube पेज तो उसमें सिर्फ एजुकेशनल सॉन्ग्स रैप्स जो आप सुनते हो रेगुलरली वो पड़े रहेंगे. अपनी मम्मी पापा का मोबाइल निकाल के YouTube पेज देखो, उस पर क्या रहेगा, कीर्तन भजन वो सारे वीडियोस YouTube पेज पे आपको मिलेंगे उनके. बिग डेटा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट role in the field of media. Whatever you want to see that only it is been shown based on the past views. देखते हैं कि तुमको क्या पसंद है. जैसे मैंने समरी में बताया था, शाहरुख खान का अगर मूवी देखना है तुम एक जैसी देखते हो आपको लाइन से on that page you are going to see the Shahrukh Khan songs and movies. So they understand the people behavior online. You will be shown different recommendations, different आपको channels दिखाएंगे, recommendation दिखाएंगे कि latest hits, past hits, whatever it is, remakes, so many things that you want to see that only it is been shown. This technique is popularly used in the Netflix and YouTube to increase the engagement and drive more revenues. ये सबसे ज़्यादा things कहाँ पे use हुआ है आजकल के present situation में. You can see YouTube and Netflix, they are earning like anything. Amazon के बाद अगर आप देखोगे तो ये सारे Netflix and YouTube are also moving ahead. Why? Because they understand the people's behavior कि what they like and accordingly they show. Now even television broadcasters are looking to segment their viewers database and show different advertisements and show accordingly. This will allow better revenue from ads and will provide a more engaging user experience. अभी फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के टाइम किस टाइप का ऐड देने का है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के टाइम अगरबत्ती का ऐड दे दिया, एजुकेशन के रिलेटेड दे दिया, आफ्टरनून में लाइक कोई डिटर्जेंट का ऐड दे दिया. तो आप देखोगे even television also nowadays taking the help of the big data to show the ads according to the audiences. जिस टाइम पे कौन सा ऑडियंस रहता है उस टाइप का एड्स आपको मिलता है. Next is education industry. Big data has inundated. Inundated means come with overpower the education industry. बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अगर आप देखो इसमें हुआ है तो education industry को. How? We can see now. It has transformed. Leaps and bounds means growing and developing. Yes, so here education department if you would see is transformed with the leaps and bounds. It means it is established that there is a changes had happened in the field of education because of the big data and it is growing also. So we have information about the student, their study patterns. We can now prepare customized and dynamic learning programs according to the needs of an individual student. आप लोग देखोगे several apps are there nowadays like extra marks, like Vedantu, like Baiju, so many apps were there, and in that app उसी ऐप में आप लोग देखोगे नॉट ओनली स्टडी चैप्टर्स रहते हैं, उनको डिफरेंट वेज में टॉट टू यू, एंड नॉट ओनली दिस देन टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर. फिर आपको टेस्ट में कितने मार्क्स है अकॉर्डिंगली आपको कैटेगराइज करते हैं, फिर से रीटेस्ट रखते हैं. सो वाई इट इज़ बिन डन? बिकॉज टू डेवलप द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स माइंड, एंड नाउ इट इज़ डिफरेंट वेज में वहाँ पे सिखाया जाता है. एवरी स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज़ डिफरेंट. अभी मैंने बताया ना कि ये एप्स में क्या होता है,
कि जैसे स्टूडेंट टेस्ट देता है तो वो टेस्ट देने के बाद अगर उसको 70 मार्क्स आया तो 70 मतलब उसको ए ग्रेड में रखेगा, अगर 60s में आया तो उसको बी ग्रेड में रखेगा, 40s आया तो सी ग्रेड में रखेगा। तो कैटेगराइज कर देता है। कैटेगराइज करने के बाद आपको आपके लेवल का टेस्ट देता है और ट्राई करता है कि आप वो एग्ज़ाम दे दे के और भी पास होके यू विल गेट द गुड मार्क्स। सो यू कैन सी दोज हु आर वीकर उनको और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देता है इन दिस एप्स। लेसन प्लान करते हैं सो दैट वीकर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट। और देखो आजकल एग्जाम के बाद तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। यस, हाउ मच मार्क्स यू गॉट, फ्रॉम द रिजल्ट वी कैन गर्ज द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं, रिजल्ट जैसे आ जाता है आपके पास्ट मार्क्स से अभी के मार्क्स को भी कंपेयर करता है। देखो प्रोग्रेस ग्रोथ इट इज़ हैपनिंग, तो वो आपको ये भी इन्फॉर्म करेगा। अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर फॉर एग्जांपल आपको 70 नहीं 62 63 आया, मतलब वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप कहीं पे वीक हो, यू हैव टू कम मोर बेटर, तो आप और उस हिसाब से स्टडी करते हो। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज। और इट नॉट ओनली टीचर्स यू द एजुकेशन रिलेटेड chapters and all, but also it guides you for the future also what you can become। okay, आपके मार्क्स देख के आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप ये सारे थिंग्स कोर्सेज कर सकते हो। In depth. Depth study of all this would definitely give new insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working in educational institute। ये सब होने से because of this education growth I had said that there is a great leaps and bounds and happened that because the big data had came in the field of education, children are very much getting the benefits of it। Children, this would in general enhance progress of all the students। big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry and that is one size fits all। normally क्या होता था, अभी जैसे एक क्लासरूम है तो सारे स्टूडेंट्स एक टाइप के नहीं रहते हैं। एक कुछ बहुत हाई अचीविंग रहते हैं, कुछ लोग मिडिल में रहते हैं, मार्क्स लाते हैं, कुछ लोग सब बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं। बट ये बिग डेटा के वजह से इतने अच्छे अच्छे ऐप्स वी आर नाउ अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल फ़ोन आजकल आ गए हैं कि रियली वन साइज फिट्स ऑल। इट मीन्स ऑल आर गेटिंग द बेनिफिट्स, नॉट ओनली द हायर स्कोरर, नॉट ओनली द मिडिल स्कोरर, बट ऑल्सो द वीकर चिल्ड्रेन, दोज आर फेलिंग ऑल्सो, उनका भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो एक ऐप से आप देखोगे सबको प्रॉफिट हो रहा है। So last paragraph, we have innumerable uses of big data। it is useful in scientific researches, understanding geographical phenomena। मतलब big data का सिर्फ हम ये uses सिर्फ 8 नहीं है, innumerable, it means uncountable। we can't helpful in other things also like in scientific research। आजकल देखो कोविड-19 है और डिजीजेस के ऊपर आप देखो इतना साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है only because of the big data। big understanding geographical phenomena मतलब एक आने वाला है सुनामी और any of the geographical problem like for example global warming, big data gives us the information helping in the smooth working of the government machineries। इलेक्शंस वगैरह अगर आप देखो प्रॉपरली होते हैं, you know, आप देखोगे वोट देने के बाद तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, आफ्टर 5-6 डेज के बाद रिजल्ट आता है, पर आपको पहले से ही समझ में आता है कि हाँ दिस पार्टी इज गोइंग टू विन। हाउ? बिकॉज यू कैन सी बिग डेटा कैन एनालाइज द पीपल्स माइंड एंड गिव यू द रिव्यू। इट इज़ द जीनी इन आवर हैंड्स। अलादीन का जो जीनी बोलते हैं ना, वो है हमारे हाथ में बिग डेटा। यस, इट लाइज इन आवर हैंड्स एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप। यस, सो स्टूडेंट्स यूज ऑप्टिमम, हाउ मच you can able to use, please use this big data, you know, because this big data is really for the benefit of the mankind। जितना आप डेवलप कर सको उतना आपके लिए यूजफुल है। So in this way we had completed the explanation of the chapter। let's move on to the icebreakers of this chapter, big data big insight। please see the page number 35। first question, give business suggestions to the respective industry or company for the following situation। one is done for you। आपको एक situation दिया है, एक incident दिया है और आपसे suggestion पूछ रहा है। okay, you have received data that, आपको पता चला है कहीं पे। first one is done for you, many passengers prefer morning flights between 7 to 9 am from Mumbai to Delhi। सजेशन, अभी ये तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सो इसको आप सजेस्ट क्या करोगे?
Increase the number of flights between 7 to 9 a.m. Second, many students are opting for UPSC or MPSC exams. What is the suitable suggestions that we can give? Make availability to arrange lectures in a college for UPSC and MPSC preparation so that the students will get the more marks and will be getting the job over there. Next, third one, if you would see, many people go for morning walk to Kamala Nehru Park. So, what is the required suggestion? The required suggestion is that the park should be kept clean, neat and clean, as well as provide basic exercise equipments are available. It is good for the people. D. Many people buy clothes from miracle.com, an online shopping site. What's the main suggestion that you want to give? We can give that the people can take care about their safe bill payment. E. The viewership on television is more between 8 p.m. to 10 p.m. What is the required suggestion? The required suggestion is programs should be family oriented, more it requires the moral and the knowledgeable so that all the children as well as the parents will get the more information from there. Next one, second question. What is the second question? People get information from various sources. Yes, of course. Can you name a few sources of information? One is done for your Facebook. Next is WhatsApp. Yes, you are connected with so many friends. Next is YouTube. Several knowledge you will get over there. Next is several internet sites are available nowadays, and last but not the least, it is television where it is giving you the full update. So moving towards the margin question answers, can you please turn to your page number 36? Can you see in the margin questions are there? Yes. First one, discuss how big data is increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. So the answer is, in the explanation I had properly taught you, big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions or trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, websites, customer contact center, social media, mobile data and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and values. Next, second one, can you see on page number 36? How can you check the condition of the goods? So the answer is, you have ordered any goods. If we had ordered, how we check it? Something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. So in the location tracking, I had taught this question. Next, in location tracking, there only one more question is there. How can you reduce risk in transport? So big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps makes use of data, big data. With geographical positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about the traffic congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas, etc. This has immensely helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. So page number 37, do you think big data improve the quality of life? How? So the answer would be, it's a personal response. So answer would be yes. I think big data has improved the quality of life because we have our own mini biomedical research devices. They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. The analysis of this data collected can give new insight and provide personalized individual feedback to each and every person. Nowadays, we have gadgets to monitor blood sugar rate, blood pressure, etc. at home, even 24/7 monitoring
24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals with the help of the big data. The doctors can even have a better diagnosis of any of the diseases, that is alignment, the effect of any drug, etc. Okay, any disease is happening, the doctor is able to cure because of the help of the big data. Turn the page number 38. There you can see in banking, finance and trading one question is there, and that is, can we understand the economy of the country by the data on banking and finance? So it's a personal response. It is yes, we can understand the economy of the country by the banking and finance because due to the big data. अभी पूरा चैप्टर बिग डेटा पे तो आप लोग आंसर अब इजीली लिख सकते हो. बिग डेटा, इट इज पॉसिबल टू एनालाइज द इकोनॉमिक कंडीशन of the country. This question, if you would see, it is on page number 39. In advertising, one question is given: do you think people click consciously on Facebook? Discuss. So the answer is, I don't think so, because people are just interested in their interesting content. They do not think much about whether it is safe or not. So nowadays much more cyber attacking it is happening in these cases. So please student, whenever you post any photos, please be conscious because it may be used by anyone. Okay, next, do you think big data will help to bring improvement in student? Yes, now it comes to your area. Yes, I think the big data will help to bring improvement in students because it will be possible to analyze their study patterns. We can also now prepare them for the customized and dynamic learning programs according to the need of an individual student. Every student's comprehension level is different. सबका mental level different रहता है. मैंने अभी teaching में बराबर से सिखाया है. The course material can now be designed catering to different requirements of the student. Big data make it convenient to understand their choices, their difficulties, their weakness, their strength, information regarding various courses and their specialities. We also have an access to the research. So please turn the next page, that is page number 40. Their last question is there: discuss a solution. Discuss a solution provided by big data. So please see, yes, we can say that the big data has provided a solution to every problem. Yes, on every problem. We have innumerable uses of big data. It is useful in helpful in scientific researches, understanding geographical phenomena, understanding in the smooth working of the government machineries, etc. It is like Aladdin ka jo genie bolte ho, it is a genie in our hand. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of the mankind. So let's start brainstorming question. Activity 1. YouTube has many videos on various things. Listen to the uses and healthy benefits of lemon and share them with your friends. Lemon reduce your body weight, yes, eliminate bad cholesterol, reduce digestion problems, protect from skin related problems, cure your throat infection, protect from high blood pressure, that is BP, threat from flu, cough, cold, fever. You are going to get the remedy, that is lemon. तो lemon बहुत फायदेमंद है. देखो, protect your toothache, act as a blood purifier, cures respiratory problems और अस्थमा का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो गुड हेयर केयर होता है आपका. ठीक है, स्टॉप इंटरनल ब्लड ब्लीडिंग. सो स्टार्ट यूजिंग द लेमन इन योर डाइट फ्रॉम today onwards. Activity 2. First one, make point-wise notes from the lesson regarding the uses of big data in the following application. Do not write complete sentences. So point number 1, the real-time data about traffic. Just point बोला है, ठीक है. Second, congestion on a particular route. Third, online purchase goods. Fourth, track the condition of the goods. Fifth, to reduce the risk in transport. Sixth, improve speed and reliability in delivery. Healthcare industry. Point number 1, just give the points from the passages, no sentences. Give new insights and provide a personalized individual feedback. Better diagnosis of any alignment, that is point number 2. Third, the better effect of any drug. Fourth, the better analysis of the health. And fifth, monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. C. Education industry. Point number 1,
Prepare customized and dynamic learning programs. Second point, can be designed required course material. Third, convenient to understand students' choices. Fourth, can gauge the progress of the students. Fifth, give new insights to the education industry. Out of 5, any 4 you can write in your notebook as answer. Activity 2, second, when you are asked for personal details on social media, what precaution will you take? Discuss in pairs and write down. So, here are the tips to stay safe on social media. First one, use a strong password. ऐसा password use करो जो कोई भी crack न कर सके. The longer it is, the more secure it will. Yes. Second, use a different password for each of your social media accounts. Okay. Same नहीं. Instagram पे अलग रखो password. व्हाट्सएप पे अलग रखो, फेसबुक पे अलग रखो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेट अप योर सिक्योरिटी आंसर option in available for most social media sites. Okay. Fourth, if you have social media apps on your phone, be sure to put the password. Okay, password जरूर रखो to protect your device. Fifth one, be selective with your friend request. सबको मत accept करते बैठो FB पे. If you don't think that a particular person you know, don't accept that person request. It can be the fake account. Students must alert. Sixth, become familiar with the privacy policies on the social media channels you use and customize your privacy setting to control who sees that and what they are seeing. Okay. Sixth, seventh one, remember to log off when you are done. If you are completed, if भूलो मत कि आपको sign off करना है. Is that clear? Next one, third, डू यू थिंक ऑल द डेटा वी रिसीव इज यूज फॉर पॉजिटिव? देखो अब आ गया मेरा क्वेश्चन कि बिग डेटा का नेगेटिव पॉइंट क्या है. यस, if no, make a list of negative things which can be done with the help of big data. What are the misuse things that happens? Please see negative things that can be done with the help of the big data. याद रखना ये, misuse of the personal information. Okay. Leaking of your information, this leads to the कोई थेफ्ट दे सकता है आपको, ब्लैकमेल आपका ही नंबर लेके कर सकता है, चीट कर सकता है एंड सो ऑन. डेटा में फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स एंड अ पर्सन मे बी हैरास्ड. सो अनसॉलिसिटेड कॉल्स और स्पैम कॉल्स आपको आते हैं, ईमेल्स, फेक ईमेल्स आते हैं, फेक FB रिक्वेस्ट आते हैं. प्लीज डोंट आंसर दैम. Okay, based on the internet history. Next question, if you would see, it's the activity 3. Now come to the vocabulary section, student. Here you can see, guess the meaning of the following idioms and phrases and use them in the sentences of your own. ईडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे जो होते हैं. ओके, तो चलो वन एक करके दिया है, वन इज डन फॉर यू. वन साइज फिट्स ऑल, इसका मीनिंग क्या है? आपको मीनिंग लिखना है और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने. इज दैट क्लियर? सुटेबल फॉर ऑल, used in all circumstances means anybody can use that. Like for example, sentence आपको बनाना है, the wrist watch have adjustable belts so one size fits all. Yes. Okay, now let's start with the A. First one, once in a blue moon. What it is? The meaning? The meaning is given in the slide. Very rare or not very often. So sentence we have to make, once in a blue moon there is an issue I can't resolve. Okay. Second, one man army. Here the meaning is someone who can do all the things. Okay, can do everything in his life and without the assistance means बिना किसी हेल्प के that person can do all the work by himself, तो उसको कहते हैं one man army. So sentence construction, every competition you are your one man army. Next, third, once bitten twice shy. It means the meaning is said when you are frightened to do something again because you had an unpleasant experience doing it the same at the first time. तो कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वापस से वही चीज़ करने में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल. ये इसका मीनिंग है. सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, I will never work with Peter again. He accepts everything to do the work on his behalf. Once bitten, twice shy. Next, D. One up
on. The meaning is to have an advantage over someone or something. किसी के ऊपर advantage मिलना. So sentence, this information is going to give me a one up over my competitor. So come to the activity 4 is a do as directed. First one, it's a grammar question, changing to positive, comparative and superlative degree of comparison का sentences दिया है. एक सेंटेंस दिया है तो आपको उसके या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव निकालने हैं, कंपैरेटिव दिया है तो पॉजिटिव या सुपरलेटिव निकालने हैं, सुपरलेटिव दिया है तो कंपैरेटिव या पॉजिटिव निकालने हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट वन. एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा. तो बिगेस्ट आ गया मतलब सुपरलेटिव डिग्री है. आपको इसको कन्वर्ट किस में करने का है, हिंट भी दिया है. फर्स्ट वन वेरी फ्यू आ गया मतलब पॉजिटिव. उसके बाद बिगर देन लग गया मीन्स कंपेरेटिव. ओके, सो वेरी फ्यू players in big data are as big as advertisers. नेक्स्ट वन सुपरलेटिव डिग्री से आपको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. use bigger than, advertisers are bigger than most of the players in big data. Next you can see no other diagnosis is as good as the big diagnosis done with the help of big data. Yeah, with the help of the big data, diagnosis is the best diagnosis. Is that clear? Next आपको better than use करके यही sentence को construct करना है. With the help of the big data, diagnosis is better than any other diagnosis. See, these internet giants provide the greatest data about people. No other data about people provides as great as. मैंने बताया no other लगता है तो as great as. Okay, these internet giants. नेक्स्ट इज आपको ग्रेटर देन यूज करना, मतलब क्या, कंपैरेटिव डिग्री. सो दीज इंटरनेट जायंट्स प्रोवाइड ग्रेटर देन एनी अदर डेटा अबाउट पीपल. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यू कैन सी रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. That is, new insights have enabled the banks and finance companies to come up with a suitable plan. This sentence can be written as new insights have enabled the bank as well as finance companies to come up with suitable plans. Remember, as well as serves the same purpose as that of coordinating the conjunction and. One of them is inserted in the sentence, others should be removed. अगर and लगा है तो आपको वो जगह हटा के as well as लगाने का है. फर्स्ट वन, वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड. यहाँ पे आपको सेंटेंस एज वेल एज करके भी बनाना है एंड आइदर और करके भी बनाना है. सो प्लीज सी द आंसर. वॉट एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड, एंड के प्लेस पे क्या आएगा, एज वेल एज, और एंड निकाल दो, एनालाइज्ड. ओके, सेकेंड, whatever activity we do online is either recorded, monitored or analyzed. Next, B, big data have seen useful identifying and tracking the exact location of a place. You have to convert into as well as and, yes, either or. So first one, big data has been useful in identifying as well as tracking the exact location of a place. Same either or करके बनाओ. Big data has been useful in either identifying or and के प्लेस पे आएगा और ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. सी, वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. सो एंड के प्लेस पे एज वेल एज लगेगा. तो वेदर सेंसर्स एज वेल एज सैटेलाइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर. अब वो एंड पे आप लोग प्लीज़ वापस से एज वेल एज लिखने मत जाना, ठीक है. एक ही जगह पे आपको एज वेल एज लिखने का, दोनों जगह पे मैंने नहीं बोला है, ठीक है. तो स्टार्टिंग में ही लगेगा. Either weather sensors or satellite help us to understand the weather and help in weather forecasting. Last one, big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. Big data helps in monitoring the outbreak of epidemics as well as diseases. ठीक है, तो big data helps in monitoring the outbreak of either epidemic or diseases. Next, activity 5. Interview the student of your class regarding the career they would like to pursue and the reason for selecting that particular career. Collect the data of your class and analyze the information you have collected. तो students, आपने 50 students का
इंटरव्यू लिया और अब आपको आंसर लिखने का है कि 50 स्टूडेंट्स का एनालिसिस करना है व्हाट दे रियली वांट टू डू इन देयर life. So I had done the answer. I had interviewed 50 students. Out of them 30 students were boys and 20 students were girls. After analyzing their career related data, I come in a conclusion that 40% students were interested to do their career in administration field. They wanted to join UPSC, MPSC competitive exam and clear them. 10% students wanted to do their career in share market, like they want to become CA. Okay, 10% students prefer to do their career in modeling or Bollywood field. They are interested in entertainment industry. Next, interestingly, 10% student wanted choose their career in YouTube field. 20% students are interested to start their own business. Okay, and 10% students wanted to join army to serve the nation. After all, I can say that the maximum students are interested to join the civil service sector because the percentage of civil service sector is 40%, and very few students are ready to join army or navy, which is the least one. It is concerning things for us. So इस तरीके से आपको लिखने का है. Next you can see second one, to listen well is as powerful a means of influence as to talk well is essential to all true conversation. Form a group and have a group discussion. So points I had given, only you have to explain it. First one is social media, curse or boon. So if used carefully, of course social media is very helpful. Judiciously, it's a boon. Means law wise देखा जाए तो बहुत boon है. If misused or people become addicted and then curse. Okay, so be alert whatever activities you are doing on social media. Second, women empowerment and equality. Points I had given both plus point and minus, you have to just explain it. Very important today, gender equality a must. The hand that rocks the cradle rules the world. However, women must take advantage of this change, must be judicious in the use of the powers given. So women should be very strong enough to use the power because they are equal as men nowadays. Next, if you would see climate change, it's the one of the biggest problem of today, must be taken serious efforts, must change lifestyle of the people required, reduce the consumption less, recycle and carbon footprint which is required. I hope while seeing these points you can able to write by your own because it's a very easy topics which are given. Next is activity 6th. Find out job opportunities in the following areas and skills required for them. A. Clinical data management. B. Network operations. C. Data processing. D. Data operation and research. E. Data entry operations. So these you can do the Google and find out the answer. So by this we come to the end of this chapter, that is we had completed today 1.4 big data big insights, and in the next lecture we will start with a new chapter, but till then read the chapter very carefully, try to write down all the notes which I had given today in your notebook and enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.